Hello student, I am Bharat sir from Thamana Education Institute. Today we are going to learn chapter number 5 of EVS subject and the title of the chapter is Anita and the Honeybees. Before we move to the chapter, we must understand some difficult word. So let us understand the difficult word first, then after we will read and understand the lesson also. Let us say difficult words that honeybees, gazed, courage, intelligent, increase, beekeeping, swollen, lychee orchard. Na? We will understand one by one. Honeybees. What do you mean by honeybees? Honeybees is a kind of insect. Let me show you picture. See the picture of honeybees. You can find the honeybee. Here you can find the type of honeybees: queen, drone, worker. They all have different duties. You can find so many honeybees. Second one is grazed. Graze means eat grass in a field, especially cattle. When you have cattle, sheep, cow, buffaloes, what they used to eat grass in the field. It means they are grazing in the field. Let me show you picture. See, you can find the sheep and goats. They are grazing in the field. See, eating the grass. Here also. Next word is courage. Courage means the ability to do something that frighten ones. Okay, courage यानी हिम्मत दिखाना. Ability to do something है ना. Yes. See, in this picture you can find the task. It is very difficult. One girl is walking through the valley on the basis of rope. तो it is a very courageful act है ना. इसमें क्या चाहिए? करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए. Here also to climb the mountain you need courage. Next word is intelligent. Intelligent means having or showing intelligence, especially of a high level है ना. Intelligence यानी अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना. Let me show you picture, then you will understand the meaning properly. If you are also saying that the person has an intelligent brain. So here you can find the picture of one boy around some formulas have written, and he is thinking intelligently and to solve the task. Next word is increase. Increase an instant of growing or making greater or expanding है ना. थोड़ा थोड़ा ग्रो अप होना, बढ़ोतरी होना. Let me show you picture. See, you can find the picture of increasing है ना. Increase. Here you can find the increasing of money. First you have little money, then it increase and it increase in a top level. Okay, increasing of money. Next word is beekeeping. Beekeeping is an occupation ना. The occupation of owning and breeding bees for their honeys. यानी एक टाइप का ऑक्यूपेशन है. क्या करने के लिए? हनी बी को कलेक्ट करने के लिए और उनका जो हनी है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए वो यूज होता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन. See, you can find the picture of beekeeping. The bees are there and a person is taking care of them है ना. Here also they gather the bees of honey bees, and then what happen? They gather the honey out of that bees है ना. Swollen is especially a part of the body becoming larger or rounder in size. यानी कोई बॉडी पार्ट है सूज जाता है ना, सूजन आ जाती है. इट्स कॉल्ड स्वॉलन है ना. बिकॉज हनी भी समटाइम्स काट लेती है तो क्या आ जाता है? स्वॉलन, और बॉडी पार्ट बिकम स्वॉल है ना.
बड़े हो जाते इट मीन्स कि सूजन आ जाती है उस पर. लेट मी शो यू पिक्चर. See here you can find the difference between two lakes. One is a swollen and was second is a normal. Here you can find the swollen eyes है ना, eyes. उसकी आंखें वो सूज गई है, सूजन आ गई है. We call it सूजन है ना. लीची orchard. लीची orchard next word है. लीची orchard is orchard है ना, orchard of lychees where lychee used to goes. लीची का स्पेलिंग यहाँ पे बुक में ऐसा दिया है जैसा यहाँ पे लिखा है, बट दूसरा स्पेलिंग वो होता है LYCHEE है ना, वो लीची का ये सभी स्पेलिंग बहुत जगह पे लिखा जाता है, तो बोथ स्पेलिंग आर राइट. ओके, लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ लीची orchards. Here you can find the picture of lychee है ना, how is the lychee fruit, inside fruit and what a kind of beans we can find there. See is the tree, lychee trees है ना, how the lychee grown up on the trees. And here you can find the orchard है ना, लीची का बगीचा. जैसे आम का बगीचा होता है ऐसे लीची का भी बगीचा होता है. इट मीन्स के सो मेनी ट्रीज ऑफ लीची आर देयर, इट इज कॉल्ड अ लीची orchard. तो वी हैव completed our keywords here, difficult words here. Now we will move to the chapter. Let us discuss the chapter. My name is अनीता खुशवा. यानी यहाँ एक लड़की अपनी स्टोरी सुना रही है, उसका नाम क्या है, अनीता खुशवा. आई लिव इन अ बोचाहा विलेज. कौन से विलेज में रहती है, बोचावा विलेज में रहती है. दिस विलेज इज एट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. वो विलेज कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार है जो स्टेट वहाँ पे है. लेट मी शो यू द मैप तो यू कैन हैव अ बेटर आइडिया.